A and B had entered into an agreement. A was supposed to purchase laptop from B on 10th of June. And it so happened that B did not supply the laptop on 10th of June. तो क्या हुआ? This is known as breach. This is actual breach. मतलब जब परफॉर्मेंस ड्यू था तब परफॉर्म नहीं किया गया तो उसे हम कहते हैं breach of contract. तो अब ए क्या कर सकता है? ए विल टेक एक्शन. ए इज फर्स्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. अब ए को पैसे देने का प्रश्न नहीं बचता है. इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी of further performance, and at the same time he has the right to take action against B. Okay, this is actual breach. ये जब ड्यू था उस समय नहीं परफॉर्म करके एक्चुअल ब्रीच हो गया. दूसरा एक तरीका ऐसा हो सकता है कि पार्ट परफॉर्मेंस आपने किया एंड देन बाय द वर्ड्स you convey to the other person that now the contract is over, now you won't be further performing the contract. Suppose there was a requirement of 25 laptops in a college and a company had agreed to supply those 25 laptops. After supplying the first 15 laptops, the college now tells that now it's okay, हमें अब और नहीं चाहिए. तो यहाँ पे कॉलेज ने एक्चुअल ब्रीच किया है. पार्ट परफॉर्मेंस के बाद by the words spoken, the college has conveyed that now it does not want further laptops. So here again, this is also known as actual breach. And sometimes by the implied or by the behavior of the person commits breach of contract. Suppose A and B had entered into agreement and A was supposed to supply some material to B on the condition that A will not supply the same material to anybody else for a particular period. And now if A supplies the same material to some other dealer, in that situation, A has by its performance committed actual breach. In this case, B has the right to take action against A because A has committed breach by its performance. Means performance against the agreement. Okay. So this is how actual breach is committed. मतलब जब परफॉर्मेंस ड्यू है तब आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्चुअल ब्रीच हुआ. दूसरा, परफॉर्मेंस के दौरान पार्ट परफॉर्मेंस के बाद आप आगे का परफॉर्म करवाने से इनकार करते हैं या करने से इनकार कर देते हैं, तब भी एक्चुअल ब्रीच हुआ. और कभी कभी जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो उनमें से कोई एक पार्टी अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा इस तरीके से कुछ काम कर लेती है जिसकी वजह से अब फर्दर परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है. तो हम उन सब सिचुएशंस में हम कहते हैं कि देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द अग्रीव्ड पार्टी हैज द राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन. दूसरा तरीका है एंटिसिपेटरी ब्रीच का. एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब क्या? जब परफॉर्मेंस ड्यू है उसके पहले बता देना कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज नोन एज एंटिसिपेटरी ब्रीच. In case of anticipatory breach, the aggrieved party has two remedies. First, it will treat the contract as it is discharged and it will take action against the party which has committed the breach of contract. Or second thing, the aggrieved party can declare that it will keep the contract alive and it wants the other party to perform the contract. First thing it can do is कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपने बता दिया कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो इमीडिएटली मान लेंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे. द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज एंड द अग्रीव्ड पार्टी विल टेक एक्शन फॉर डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट और फॉर कॉम्पेंसेशन. या फिर अग्रीव्ड पार्टी या जो दूसरी पार्टी है वो ये कहेगी कि आई डोंट नो एनीथिंग, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल अलाइव, आई वांट यू टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस सिचुएशन, इफ द अदर पार्टी परफॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट, द फर्स्ट पार्टी विल हैव टू, जिस पार्टी ने ये कहा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अलाइव है, उन्हें परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा.
फिर वो ये नहीं कह सकते हैं, अरे उस समय आपने कहा था कि आई एम नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो अब मैंने कहीं और से परफॉर्मेंस ले लिया है या वो गुड्स ले लिए हैं, आई एम सॉरी, it cannot happen. Now when that person is performing the contract, this person will have to accept the performance. In this, there can be a twist. Suppose, due to any reason, if the performance becomes impossible, supervening impossibility, the performance of the contract becomes impossible, maybe due to natural calamity or something else, then in that situation, the first party loses the right to claim compensation. Why? Because now the contract has become impossible to perform. अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड. तो जो पार्टी ये कह रही थी कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, अब वो कॉम्पेंसेशन का भी राइट उनका लूज छोड़ना पड़ता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा था. दे हैड केप्ट द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव. यदि वो उसी समय एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट कर दिया है, एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दी है, तो कॉम्पेंसेशन का क्लेम बचता था. लेकिन ऐसा नहीं करने की वजह से अब वो ये नहीं कह सकता कि अरे यू वर नॉट रेडी टू परफॉर्म दैट टाइम ना, सो नाउ यू गिव मी द कॉम्पेंसेशन. इट कैन नॉट हैपन दिस वे. So this is how the contract is terminated, by actual breach or by anticipatory breach. Actual breach मतलब जब performance due है तब perform नहीं करना is known as actual breach. Anticipatory breach मतलब beforehand बता देना कि sorry I cannot perform the contract. तो उस समय फिर क्या क्या rights रहेंगे कि एक तो उसी समय ये मान लिया जाए कि हाँ ठीक है contract terminate हो गया, और फिर क्या रेमेडीज हैं, उसके लिए क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, डैमेजेस क्लेम करने हैं, जो भी करना है वो एक्शन लिया जाए. या फिर ये ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल केप्ट अलाइव, तो फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. And if at all, due to the change in the circumstances, due to some natural calamity, due to supervening impossibility, if the performance becomes impossible, this party will not have the right to claim any damages because the contract will become void. So, this is how contract is terminated or discharged by breach also. Happy learning. Stay tuned.